Hello Medicos, I am Dr. Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico. So in the today we will be starting the Repertory series. So as you guys know, I am doing my MD in Repertory. सो मेरे को बहुत सारे प्रेजेंटेशंस बनाने पड़ते हैं फॉर आर रेगुलर करिकुलम. हमारा ऐसा ही है कि दैट वी हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन एंड टीच. सो फिर मेरे पास अभी रेपर्टरी का काफ़ी कुछ प्रेजेंटेशंस होते हैं क्योंकि मुझे वो बनाने पड़ते हैं. सो विल बी स्टार्टिंग ए रेपर्टरी सीरीज़ और मैं आपके साथ सारे मेरे रेपर्टरीज़ के वीडियो शेयर करूँगी. अब ये जो TPB है, आज हम देखेंगे थेरेपेटिक पॉकेट बुक. सो थेरेपेटिक पॉकेट बुक इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. VIP, very important question for 20 marks. और why I am starting with therapeutic pocket book is therapeutic pocket book एक ऐसी चीज़ है जो मैंने मेरे सिनॉप्सिस के लिए लिया है. अब उसमें मैं क्या अलग कर रही हूँ, वेरी मच बहुत कुछ अलग कर रही हूँ. मैं जल्दी मेरा सिनॉप्सिस का टॉपिक एक बार वो अप्रूव हो जाए MHS की तरफ से, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी. और एंड आई होप कि मैं आपको कुछ उससे सिखा पाऊँ या फिर मैं 3 साल बाद जब मैं अपना डिसर्टेशन दूँ तो उससे मैं कुछ कंक्लूड कर पाऊँ और अच्छा रिजल्ट दिखा पाऊँ मेरे रिसर्च का. सो थेरेपेटिक पॉकेट बुक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. वाई आई चूज़ थेरेपेटिक पॉकेट बुक. बहुत लोग बोल रहे यार थेरेपेटिक पॉकेट बुक ये कौन यूज़ करता है प्रैक्टिस में. Why not? ऐसा था मेरा क्यों नहीं यार. 50 years it is being used. जब केन रेपर्टरी और वो सब नहीं आया था, 50 साल ये यूज़ हुआ है. खुद हेनीमन सर ने इसका प्रीफेस लिखा है एंड हेनीमन हिमसेल्फ यूज दिस बुक. तो फिर यार इसमें कुछ तो भी होगा. सो व्हाट इज़ दैट कुछ तो भी आई नीडेड टू फाइंड आउट एंड से सो आई टुक थेरेपेटिक पॉकेट बुक. सो ओके, इफ आई विल टॉक अबाउट माई सिनॉप्सिस ना, देन आई विल टॉक फॉर एन आवर बिकॉज आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग. So therapeutic pocket book. Let's start with today's topic. Also for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at the Learning Medico. Link description box में दी हुई है. Also do check out my book Parasitology Notes which is available on Amazon. जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज ज़रूर शेयर कीजिए. So let's start with today's topic, therapeutic pocket book. So the full name is The Principles and Practicability of Boenninghausen's Therapeutic Pocket Book for Homeopathic Physician to use at the bedside and the study of the Materia Medica. So मैंने अभी जिस फॉर्मेट में नोट्स बनाए हैं, अगर आप इसमें लिखोगे वैसे ऐसे हेडिंग्स देखे तो आपके जो एग्जामिनर है उनको बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम पेपर आपका चेक करना एंड आपका बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा. सो होप आप ऐसे ही लिखो. सो name of the author Baron Clemens Maria Franz von Boenninghausen 1785 to 1864. You can only write von Boenninghausen, इतना भी आप लिख सकते हो अगर आपको पूरा नाम नहीं याद रहता. It was edited by T.F. Allen. So year of publication was 1846. Editions, first edition came in 1846 and the 5th American edition by Dr. T.F. Allen. ओके, आई जस्ट डिडंट मेंशन. यहाँ पर कुछ तो भी क्वेश्चन मार्क है. सो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी. आई गेस वो रह गया होगा पब्लिकेशन का ईयर लिखना. ओके. नंबर ऑफ पार्ट 7. टाइप ऑफ रेपर्टरी इज अ लॉजिकल यूटिलिटेरियन टाइप ऑफ रेपर्टरी. इवोल्यूशन इन 18 एवोल्यूशन कैसे हुआ है थेरेपेटिक पॉकेट बुक का. सो 1832 में फर्स्ट रेपर्टरी आई बोनिंगहाउसेन की विच वॉज रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरी. 1835 में सेकेंड रेपर्टरी आई रेपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरी. 1836 में अटेम्प्ट ऑफ शोइंग द रिलेटिव काइंडशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन और 1846 में फाइनली थेरेपेटिक पॉकेट बुक आई. सो डिफरेंट एडिशंस एंड ट्रांसलेशन. सो ओरिजिनल वर्क किसमें था, जर्मन लैंग्वेज में था. उसको एक इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था एक जर्मन पर्सन में, उसका हमें नाम नहीं पता. फिर और फ्रेंच में ट्रांसलेट किया था खुद बोनिंगहाउसेन ने इस बुक को. और दूसरे ट्रांसलेशंस क्या थे, रोथ ने भी इसको ट्रांसलेट किया था जर्मन से फ्रेंच में. 1846 में बुक आई थी. 1847 में हार्वर्ड ओकी ने उसे ट्रांसलेट किया था. 1847 में चार्ल्स हेम्पल ने किया था. 1891 में T.F. एलन ने ट्रांसलेट किया था. 1935 में H. रॉबर्ट एंड एनी विल्सन ने किया था. एंड इन 2000 जिप्सर एंड डिमिट्रेट्स ने उसको ट्रांसलेट किया था.
सोर्स बुक क्या है? रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, रेपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक, एंड अटेम्प्ट एट शोइंग द रिलेटिव काइंडशिप ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन। ये तीनों उसके सोर्स बुक्स थे। फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड क्या है? बोनिंगहाउसेन्स थेरेपेटिक पॉकेट बुक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरलाइजेशन और एनालॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो बोनिंगहाउसेन saw things in a large generalities and used this ability to synthesize several rubrics into generality, something Kane never quite understood. The totality is simply the complete picture of the disease, and complete picture is denoted by a complete symptom because the part represent the whole as a say. मतलब बोनिंगहाउसेन का क्या कहना था है कि जो अभी कुछ मोडालिटी है वो मेरे हेड से रिलेटेड है, तो बोनिंगहाउसेन ने ऐसे कहा अगर वो मोडालिटी उसके हेड से रिलेटेड है तो वो उसके पूरे पार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि पर्सन एज ए सिक एज अ होल होता है, ना कि उसका इंडिविजुअल पार्ट होता है, जो कि केंट कभी समझ ही नहीं पाए। So he reduced the concept of totality of symptom into totality of complete symptoms. He writes that a group, ये बहुत important है, he writes that a group is more important than a single symptom. A complete symptoms give individualizing features of a case, particularly when modalities are marked. So the following fundamental concept from the bedroot of his therapeutic pocket book, ये जो 4 concept है, doctrine of analogy, doctrine of concomitance, evaluation of remedy and concordance, these are the 4 fundamental concepts on which therapeutic pocket book is based on. First is the doctrine of analogy. So Boenninghausen's analytical mind came to a conclusion that to complete a symptom, the local modalities and sensation pertaining to one part should be applied to the other part. Thus he raised local symptoms to the general level, which could be used for the whole person. This principle is also called as doctrine of grand generalization. He considers sickness as an expression of the whole man and not an part. All the modalities which are noticed in one part but missing in the other part should be taken as an expression of the whole person. However, this approach may not serve the cases wherein different parts express different modalities. Let me explain. What's simple? तो बोनिंगहाउसेन का एनालिटिकल माइंड क्या बोल रहा था कि अगर कुछ मोडालिटीज और सेंसेशन एक पार्ट में है तो वो उसको एज एन होल ले सकता है, एज एन जनरल लेवल पर उसको रेज कर सकता है। और उन्होंने क्या किया? ग्रैंड जनरलाइजेशन किया। मतलब अगर मेरे को पेट दुख रहा है, वहाँ पर मुझे कुछ मोडालिटीज मिल नहीं रही है, तो और बट मेरा हेडेक भी हो रहा है उसके साथ, और मुझे पास हेडेक में मोडालिटीज़ है, तो उन्होंने क्या कहा है कि ये एक लोकल जनरल लेवल पर रेज करो और वो मोडालिटीज़ भी हम साथ में कंसिडर कर सकते हैं। Doctrine of concomitant. Boenninghausen first identified in each case a group of symptoms along with the main complaints were generally overlooked by the patient and unnoticed by the physician. Such a group even appeared to be unrelated to the main complaint. Concomitance को बहुत importance दी थी बोनिंगहाउसेन ने. Then evaluation of remedy. Boenninghausen was the first to grade the remedies. Many drugs produce the same type of symptom, but he noticed a difference in frequency and intensity in the appearance of symptoms. The notion of the grading of drugs he indicated in terms of 5 ranks by the use of different typography. Capital 5 marks first grade, bold 4 marks second grade, italics 3 marks third grade, Roman 2 marks 5 grade, and Roman in parenthesis 1 mark 5th grade. तो बोनिंगहाउसेन पहले थे जिन्होंने इवैल्यूएशन किया था, ग्रेडेशन किया था सिस्टम का. ओके क्योंकि उनको लगा कि सेम टाइप मैंने बहुत सारे इसमें हैं कि एग्रेवेशन प्रेशर है, बट मेडिसिन ए में ये सिर्फ 1 मार्क की इंटेंसिटी का है, बट मेडिसिन बी में ये 5 मार्क की इंटेंसिटी का है. तो वो उसको इम्पोर्टेंस दिया बोनिंगहाउसेन ने. Concordance. Boenninghausen's keen observant mind noticed that a relationship existed among the remedies. He incorporated a chapter on this subject in this therapeutic pocket book towards the end. And this chapter discusses the relationship of remedies under the head, mind, locality, sensation, glands, bone, skin. हाँ तो क्या है जो अपना थेरेपेटिक पॉकेट बुक है वो होने के बाद एक रिलेशनशिप का सेक्शन आता है, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ का सेक्शन. तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है और उसको हम जैसे रेपर्टराइज करते हैं वैसे ही बनाकर हमें पर्टिकुलर रेमेडी का रिलेशनशिप निकालना पड़ता है. अगर आपको वीडियो चाहिए कि इस पर कैसे वर्कआउट करें, एक्चुअली जब मैं यूजी में थी मुझे भी नहीं आता था, बट यहाँ पर पीजी में आने
बताने के बाद मैंने मेरे एक सीनियर को इतना दिमाग ख़राब किया एंड मैंने उनसे समझ के ले लिया ये रिलेशनशिप का सेक्शन कैसे यूज़ होता है। तो अगर आपको उस पर एक वीडियो चाहिए तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पर एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। ऑफ कोर्स आई मेक अ वीडियो ऑन दिस। Plan and concentration. Boenninghausen's therapeutic pocket book is mainly divided into introduction and philosophical part, repertory proper, and relationship of remedies. Repertory proper is divided into three components of a symptom, that is location, sensation, modalities, and concomitants. TPB has following 7 parts. First is mind and intellect, second is parts of the body and organs, sensation and complaints. तो sensation and complaints में in general, of glands, of bones and of skin. Fourth is the sleep and dreams. Fifth is fever, fever में circulation of blood, cold stage, coldness, heat, perspiration, compound fever and concomitant complaints. Sixth is alternation of state of health. इसमें आया है aggravation according to time, aggravation according to situation and circumstances, and amelioration by position and circumstances. Then is the seventh is the relationship of remedies. Seventh is the relationship of remedies. नंबर ऑफ रेमेडीज ओरिजिनल बुक में कितने थे? 126 रेमेडीज थे। एलन्स ने क्या किए? 4 रेमेडीज ड्रॉप किए, एंगुस्ट्रा, मैग्नेटिस पोलिस एम्बो, मैग्नेटिस पोलिस आर्टिकस एंड मैग्नेटिक पोलिस ऑस्ट्रेलिस, और एंड देन एलन एडेड 220 रेमेडीज, सो टोटल है 342 रेमेडीज। Adaptability क्या है? Therapeutic pocket book can be used for the repertorization of following types of cases: cases with complete symptoms, cases with prominent sensation and modalities in some part but vague in other, cases with prominent concomitants, cases with paucity of symptoms with scattered modality and no characteristic, cases where generals are lacking. It is also useful to get related remedies while working on the last chapter. Methods of repertorization. The following are the 2 methods of working out a case with the help of Boenninghausen's therapeutic pocket book. पहला है रॉबर्ट्स मेथड। तो रॉबर्ट क्या कहते हैं कि हमें पहले केस को लेना है, फिर उसको लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज में डिवाइड करना है, हेडिंग्स देने हैं, एंड वैसे ही हमें रूब्रिक्स को अरेंज करना है। बट जो सेकेंड मेथड है जो कि मॉडर्न मेथड है, रॉबर्ट मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत हार्ड हो जाता था। तो डॉक्टर एम.एल. ढवड़े ने एक मॉडिफाइड द मेथड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द प्रिंसिपल्स एंड रिजल्ट बाय रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ सिम्टम्स। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडिफाइड मेथड द सिम्टम्स शुड बी अरेंज्ड इन फॉलोइंग हायरार्की: causative modalities, emotional, intellectual and physical, general aggravation, general amelioration, physical, general, sensation and complaints, concomitants and mentals for reference and differentiation. स्पेशल फीचर्स क्या है? थेरेपेटिक पॉकेट बुक इज यूजफुल एट द बेडसाइड एंड द फर्दर स्टडी ऑफ द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। इट कंटेन्स एन एडिशनल चैप्टर रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज, जो कि बहुत हेल्पफुल है। एक बार बस आपको समझने की देर है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आई नो कि आपको ये क्या है, ये क्यों है, बट एक बार आपको समझ आए अरे भाई ये कितना सही है, ऐसा हो जाता है। देन द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन थेरेपेटिक पॉकेट बुक आर डिराइव मेनली फ्रॉम हैनीमैन's वर्क, सो द इंफॉर्मेशन एंड द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर मोर authentic and they have been verified by Boenninghausen in clinical practice. The sensation and modalities chapter contains several useful research which can be related to various parts as well as to the whole person. The repertory has 5 different typography to denote the various grades of remedies. The repertory contains mental rubric at one place, at 2 places, mind and modalities, though not all but some chapter contain details of concomitants separately given towards the end of chapters. The adaptability of this repertory make it very useful for practitioners. क्रिटिसिज्म क्या आया था? द नंबर ऑफ रेमेडी ओरिजिनली द थेरेपेटिक पॉकेट बुक हैज ओनली 126 रेमेडीज, बट एलन हु एडिटेड दिस बुक ड्रॉप्ड आउट 4 ओल्ड मेडिसिन्स एंड एडेड 222 न्यू रेमेडीज, हेंस द टोटल नंबर ऑफ रेमेडीज केम टू 342. नंबर ऑफ rubric excuse me. The number of rubrics given in the book are not many. Rubrics and medicine, though in the location part, a large group of medicines are maintained under most of the rubric, but in other section we find many rubrics which do not contain well-known and important medicines.
Some of the medicines are repeated often and given undue importance in the book. The mind section is not well presented in the book. There are only 18 rubrics under mind and 17 under intellect section. Concomitants and mental symptoms, a group of medicines appear under this heading which are not useful in practice. The book itself does not strictly follow this principle in construction. Indexing of medicine has not been attempted. There is no fixed order in the arrangement of rubrics. Rubrics are misplaced. Many rubrics are misplaced in the book. Some similar rubrics, there are number of similar rubrics under different headings found in this book which confuse the beginners. Different types of sensations are mentioned specifically in the book. This book has not been updated, hence it lacks information about sarcoids and nosodes. सो क्विक रिवीजन, आज हमने देखा थेरापेटिक पॉकेट बुक. आपको कैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, उसमें कैसे पॉइंटर्स डालने हैं, वो मैंने स्पेसिफिकली प्रॉपर बताया है. सो होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल. इफ सो देन हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको. सी यू सून. बाय बाय.